Good morning, class. Today I welcome you all on behalf of Rasa International School to study Science, chapter number 11 of class 10th, The Human Eye and the Colorful World, part 2. It is on your page number 187 to 188. In this, we will study about the human eye, how it looks like, and what are the different things which have been present in the eye. Okay, so the human eye is the most valuable and sensitive sense organ. Okay, most valuable and sensitive sense organ. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. तो ह्यूमन आई क्या है, वो क्या है, सेंसिटिव ऑर्गन है. किसके लिए सेंसिटिव है? ये लाइट के लिए. ओके, एंड मोस्ट वैल्यूएबल. Why it is valuable? Let us discuss that. On closing our eyes, we can identify the objects to some extent by their smell, taste, sound they make and by touch. अगर हम अपनी आंखों को बंद कर लें तो हम एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ हद तक. ओके, बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक एंड बाय द टच. But it is impossible to identify the color by the closed eye. Okay, thus all of the sense organ the human being, okay, have, the eye is the most important or most significant. Okay, as it enables us to see the beautiful colorful world around us. Is it okay? So let us discuss about the various parts present in the eye. Okay, so let us discuss one by one. The human eye is just like a camera. Its lens system forms an image of the light sensitive, okay, on the light sensitive screen called retina. So this is a screen, okay, where the image is being formed by the help of the lens system. This is your crystalline lens. Which type of crystalline lens it is? Convex, as we have discussed. It is the crystalline convex lens present in the eye which forms the image on the light sensitive screen. Which is light sensitive screen? Retina. Retina is the light sensitive screen. Okay, where, so first question is where the image is formed. You will say on the retina. Is the retina is light sensitive or not? Yes, it is light sensitive screen. Okay, which system forms the image? The lens system forms the image or an image of an object on the light sensitive screen, that is retina. So these are the questions you should be able to answer by this stanza. Okay, now we will move further. The light enters the eye through the thin membrane called cornea. Now there is a thin membrane called cornea. See, this is your cornea. It is a thin membrane. Most of the light, okay, that enters the eye is first passes through the cornea, and the process over here that take place, it is reflection or refraction. It is refraction of light, as the light passes from air into the eye, that is from one medium to the another medium. It forms, okay, it forms the transparent bulge on the front surface of the eyeball. Now this is the eyeball and it is forms a bulge out. This is bulge out, उभरा हुआ है. Okay, so it is forms the transparent bulge on the front surface of the eyeball. So इस eyeball के front part में ये एक bulge out part है. कौन सा? Cornea. Okay, the eyeball is approximately spherical. मतलब ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल है बट एग्जैक्टली नहीं. इसका डायमीटर कितना है बेटा? 2.3 सेंटीमीटर. दीज थिंग्स टू बी remember. Okay, first of all, eyeball is approximately spherical and its diameter is about 2.3 centimeter. It is diameter and the radius will be half of 2.3 centimeter. Is it clear?
Next, most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. जितनी भी जो लाइट है जो आई हमारी आई के अंदर एंटर कर रही है वो कहाँ से पास हो रही है? रिफ्रैक्शन के थ्रू कॉर्निया से. ओके, सो द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of the focal length required to focus the object at different distances on the retina. Now we know that when we have studied the convex lens, we have studied 6 cases. When the object is placed at infinity, when the object is placed beyond 2f, when the object is placed at 2f, when the object is placed between 2f and f, when the object is placed at f, and when the object is placed between optical center and f. So that 6 cases we have studied, and in that the lens is able to form the image at different positions. Now there the value of v varies, that is the image distance in that case. So we are able to see the image at different positions, but here we have to see the image on the retina only. So we have to control, okay, basically in the eye we have to control the focal length of this convex lens so that always the image form on the retina. This is the most important part. जब हमने लेंस पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस पढ़े थे, तो उस केस में बेटा जो इमेज बनी थी, जब हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखा था तो अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनी थी, इमेज डिस्टेंस अलग अलग था. लेकिन यहाँ पे इमेज डिस्टेंस अलग अलग नहीं हो सकता. आपकी इमेज हमेशा कहाँ बननी चाहिए? रेटिना के ऊपर. तो आपको कॉन्वेक्स लेंस की क्या कंट्रोल करनी पड़ेगी? आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कंट्रोल करनी पड़ेगी ताकि उसका हमेशा फोकस कहाँ रहे? रेटिना पे रहे. Is it okay? So that is written over here. The crystalline lens merely provides the finer adjustment to the focal length required. एडजस्टमेंट किस में हो रही है? फोकल लेंथ में. किस लिए? रिक्वायर्ड टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. मतलब जो ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरी पे हैं उनका फोकस, उनका जो इमेज है उसको कहाँ बनाना है? रेटिना के ऊपर. इज इट क्लियर? सो वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया. कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? आइरिस. नाउ यू आर एबल टू सी द आइरिस ओवर हियर. दिस इज द आइरिस. ओके, नाउ दिस आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल. ये प्यूपिल जो है एक ओपनिंग है. द आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. आइरिस क्या करता है? ये जो ओपनिंग है छोटी सी आपको दिख रही है, इसको मैं ग्रीन कलर से पॉइंट आउट कर रहा हूं. द स्मॉल ओपनिंग इज बीन कंट्रोल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द आइरिस विच इज अ मस्कुलर डार्क मस्कुलर डायफ्राम. द प्यूपिल रेगुलेट्स. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. हमें क्या होता है कि हमारी आंख के अंदर मीन्स इन ह्यूमन आई द लाइट इंटेंसिटी शुड बी कंट्रोल्ड. जब ज़्यादा रोशनी होती है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, और जब कम रोशनी होती है तो प्यूपिल का साइज ज़्यादा हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर जा सके और हमें ऑब्जेक्ट डार्क ना दिखे. कैसा दिखे? ब्राइट दिखे. इज इट ओके? सो द आइरिस, okay, what it do? The pupil regulates and control the amount of light. And what do iris do? The iris controls the size of the pupil. Iris pupil का size control करता है and pupil regulate करता है amount of light. Where? That we have studied. This is the pupil. This is your iris which controls the size. Okay. And the pupil control the amount of light entering the eye. ओके, कहाँ पे कंट्रोल करता है? कि आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी. ओके, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज. आई लेंस कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड. दिस इज एन इंपॉर्टेंट. द आई लेंस फॉर्म्स रियल एंड inverted image of the object on the retina.
The retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. रेटिना क्या है? लाइट सेंसिटिव है और इसके पास क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं. कौन से होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स इसके पास? इसके पास दो टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल हैं, कॉन एंड रॉड. कोन शेप एंड rod shaped cells. Okay. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signal. इसके पास जो लाइट सेंसिटिव सेल हैं, इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं. These electrical signals are sent to the brain via optical nerve. Now where that optical nerve is? इस रेटिना के ऊपर जब आपकी लाइट पड़ेगी तो इसके लाइट सेंसिटिव सेल क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे. रेटिना कहाँ है? दिस रेड कलर. तो इसके लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे. जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस ऑप्टिकल नर्व से कहाँ जाएंगे? ब्रेन के पास. ओके. सो दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर बीन सेंट टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिकल nerve or optic nerves. The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive objects as they are. और ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हम देख पाते हैं जैसे सब ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर. ओके. थैंक यू.